एग्जाम्पल 4.4 पे जाते हैं हम। एंड आई थिंक फ्रॉम दिस पॉइंट ऑन आपके पास बेसिकली यही दो फॉर्मेट्स है, या तो आपके पास जो एग्जाम्पल, पहली एग्जाम्पल तो की तरह आएगा या सेकंड एग्जाम्पल की तरह। नाउ दिस वन इज इंटरेस्टिंग, इसमें आपको लेट्स सी एट द नंबर्स, ठीक है, एफ वाई दिया हुआ है आपको, एफ थ्री दिया हुआ है, और रो दिया हुआ है अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.18 एफ डैश सी और एफ वाई। समझ रहा हूँ, इस तरह। उसके अलावा साथ में आपको 25 फीट स्पैन दिया हुआ है, और डेड लोड 2 के पर फीट इन एडिशन टू इट, यानी एक्सक्लूडिंग सेल्फ वेट, और लाइव लोड 3 के पर फीट का दिया हुआ है। तो इसमें एक्चुअली इट्स इंटरेस्टिंग क्योंकि यू हैव बोथ अप्रोचेस। हम जिस तरह पहले नॉर्मल स्टेप्स करते हैं, वो भी कर सकते हैं कि हम जो है एल से फिर हम डिराइव करें अपना हाइट विड्थ एंड सो ऑन, या हम इस अप्रोच से भी चल सकते हैं कि हम रो से आर एन निकालें और उधर से भी गो समवेयर, ठीक है। तो इट्स अप टू अस बेसिकली इधर। लेट्स से व्हाट्स टू बी ऑनेस्ट, लाइक आई एम मोर कंफर्टेबल कि मैं इससे चलूं कि एल वगैरह से चलूं। आई लाइक द सिंपल अप्रोच, मुझे रिवर्स अप्रोच पसंद नहीं है। तो वी विल डू दैट, ठीक है। वन सेकेंड, वन सेकेंड। ओके, सॉरी अबाउट दैट। आई नो ये रिकॉर्डेड वीडियो है, बट थोड़ा सा आपको ये टॉलरेट करना पड़ेगा क्योंकि आई विल नॉट हैव टाइम टू एडिट दीज थिंग्स आउट एनीवेज। अच्छा, तो लेट्स स्टार्ट विद first step. The first step is get height from L, and then get width from H. This was, let's look at the question. Simple span है L25. Simple means K. I mean, you can look at the table, but I remember KHS should be equal to L over 16, which is 25 feet over 16. Let's look at it. 1.56 feet. और अगर मैं इसको 12 से मल्टीप्लाई कर लूँ, 18.75 इंचेस का ये बोल रहा है कि आपकी हाइट होनी चाहिए। Second. Yeah. अब इसमें हाइट आई वुड से कि दिस इज टू 18, 17, 19 भी नहीं, 20 भी नहीं। मल्टीपल ऑफ 2 and 3, the closest one is 24 inches, right? मगर let's see, let's see with 20 inches के साथ हम लेके चलते हैं। Let's say the height is 20 inches, which would also give the depth as 17.5 inches, और width इससे हम लेंगे, I think 10 is too small. 20 inch divided by, sorry, 1.5 was 13.33, let's say 14 इंच की हम width लेते हैं। अब
I've done these questions too many times to realize that this may not work. क्योंकि look at the loads we have. A dead load of 2 kip per feet, 3 kip per feet. This indicates कि इसमें अच्छा खासा लोड होगा और 20 इंच बीम may not be able to sustain this much. और खैर वो तो आपको गट फीलिंग आती है बाबा सॉल्व करने से. So let's try it. ठीक है, let's go with it. तो इधर से फिर आपके पास सेल्फ वेट आ जाएगा. सेल्फ वेट इज 14 times 20 over 144 times 150, which would give you 14 times 20 divided by 44 times 150, 91.66, let's say 292 pound per feet, which is 0.292 kip per feet. And then this will give you a W of 1.2, 0.292 plus 2 plus 1.6 of 3, and that would give you 1.2 of 2.292, 1.6 of 3, 1.55. This is actually a lot of weight. So, okay, feet, which would give mu as WL square over 8, 7.55 times 25 square over 8 will give you 7.55 times 25 square 8, 589.8. Let's just say 590 get feet. Okay. When you have this and mu, what we can do is that we can get Rn, which is mu over phi bd square. 590 times 12,000. This would be 0.9. Width हमारी थी 14 times 20 square. So was it 20? Sorry, 17.5. So इसको मैं 59, not 509, 590 times 12,000. 9 times 14 times 17.5. और इसको मैं square कर देता हूँ, and that gives you an Rn of 1834.791. This Rn is, I would say कि ये बहुत बड़ी वैल्यू है, राइट? और कभी कभी होता है. सो ओके, लेट्स सी. हम इस Rn से कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं दिस थिंग, एंड लेट्स सी हाउ दिस गोस. ये एरर आपके पास आ सकता है, एंड दिस एरर टिपिकली मीन्स कि आपकी बीम साइज इज टू स्मॉल. 0.85 times 4,000 or 60,000, 1 minus 2 times 1834.791 over 0.85 F dash C. Now, if we look at this value, right, F dash C will come what is it? 1,000. Let's go with 2 times 1834.791 over 0.85 times 4,000. Now, ये एक इंटरेस्टिंग जगह हम फंस गए. मैं पूरा नहीं सॉल्व कर रहा, बट लुक एट दिस. 1 माइनस ये वैल्यू आई है 1.07. Now this is a problem क्योंकि this means कि that this value is now root of minus 0.07, और ये एक complex number होता है. You cannot root a positive a negative number.
So what does this mean? It means कि this is too large. इसको आपको कम करना पड़ेगा इस वैल्यू को, ठीक है? एंड मे बी दिस गिव्स यू हिंट कि क्यों आपको दो चीजें दी थी, तो आपको ये बोला कि रो अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0.18 f dash c over f y, यानी कि ये बोल रहे हैं कि try to keep the row at c 0.18 times 4,000 over 60,000, and that is 0.012. Now let's try to go backwards, ठीक है? If you remember, बस रो की वैल्यू थी, सॉरी, जो हमारे पास आर एन की वैल्यू है दैट इज एम यू ओवर फी बी डी स्क्वायर, ठीक है? ये वाला आर एन इस रो के थ्रू कैसे आएगा? तो what we can do is that we can inverse it. हम इस तरह कर सकते हैं, इस तरह हमने इधर किया था सेकंड क्वेश्चन में. You have this equation, right? Let me copy paste it here again. Oops. Sorry, we copy. This- So we can do is that we can get Rn from this value. So यानी कि 0.012 of 40,000. Now if you look at this, ये वाली value जो है, we already did that before, right? क्योंकि if you remember, all you need is rho fy and fc. If you look at the previous question, उसमें rho was provided as 0.012, right? So हम इधर से value दोबारा उठा सकते 643.77. So basically, the Rn we should be aiming for should be 643.77. That's the PSI movement. Now, in this case, what would that be? In this case, let's say BD square आपका आता है MU हमने previously निकाला था, और उसी वैल्यूज थोड़ी चेंज हो सकते हैं क्योंकि if you remember के इधर हमने 14 और 20 का लेके उधर से आए थे हम सेल्फ मेड, तो अब चेंज हो सकता है बट वी नीड अ स्टार्टिंग पॉइंट, तो इधर 590 है हमारे पास, राइट? तो लेट्स गो विथ 590, 0.9 times width again. हमारी width है 14, I believe. 14 times the depth is 17 point, uh, sorry, question, मैं previous question के साथ मिला रहा हूँ. BD square is equal to Rn of this, so this is 590, तो हम 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, हम इधर 0.9 लाएंगे, this will be phi, ये ऊपर आ जाएगा और Rn नीचे आ जाएगा, तो Rn would now be here 643, यानी 644 approximate ले लेते हैं, and your BD square value required is 290 times 12,000 online divided by 644, 12,215.3. इसमें अब हमने प्रीवियस क्वेश्चन में थोड़ा सॉल्व किया था, तो विल ट्राई टू सी कि अगर उधर हम BD स्क्वायर का टेबल से कुछ आइडिया हो जाए कि हम कौन सी वैल्यूज यूज करें. So 15 and 30 gave us 13,400. 14 and 30 gives us 600. We could technically do that again कि हम 14 30 दोबारा ले लें इस बीम के लिए. So could try 14 30 with this, and we will get go with B as
inches and ds 30 inches जैसे हम ये सॉल्व कर सकते हैं। अब आपको फिर ये प्रोसेस दोबारा रिपीट करना होगा, ठीक है। क्योंकि अब दो दफे कर चुके हैं, थर्ड टाइम वो आई फाइंड आउट एक्सप्लेन आई थिंक इधर से आप दोबारा करो। तो इट्स बेसिकली एन आइटरेटिव प्रोसेस कि आप जो है अपना बी और डी सेलेक्ट करते हो, उधर से फिर आप रो चेक करते हो, आर एन चेक करते हो, और अगर ठीक आई तो यस, अगर गलत आई फिर आप वापस बी और डी सेलेक्ट करोगे। दिस इज अ साइकिल, दिस कीप्स गोइंग ऑन, ये इटरेटिव प्रोसेस होता है। और अगर आपको कोई क्विज या असाइनमेंट या असाइनमेंट में तो खैर आपके पास टाइम होता है, बट क्विज या मिड या एंड में जो है आपको ये चीज़ बार बार करने की जरूरत नहीं होगी। आप एक दफ़ा या दो दफ़ा करोगे जस्ट टू शो दैट यू नो हाउ टू डू इट एंड देन द प्रॉब्लम इज रिजॉल्व, ठीक है। तो वी यूजुअली गो बाय दिस अप्रोच। तो आई वुड लाइक कि आप ये खुद फिनिश करें इफ यू कैन। अगर आपको कोई इशू हो रहा है यू कैन ऑब्वियसली कम टू मी, आप फिर से कम टू मी आफ्टर क्लास या ड्यूरिंग क्लास के सर ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं हुआ, प्लीज कैन यू हेल्प अस, एंड आई बी लाइक ओके, ठीक है। अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ जाते हैं, समथिंग दैट इज मोर प्रैक्टिकल और जो हम अभी करेंगे, ठीक है।